जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम आज के हमारे सेशन के लिए फ्रॉम नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। मेरा नाम है सालिम रहमान और हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर हारून लतीफ़। डॉक्टर साहब थैंक यू, हम बहुत मशकूर हैं आपने हमें ज्वाइन किया आज के सेशन के लिए। फॉर हमारी कंटिन्यूइंग गोल होता है एट नूर इंटरनेशनल के हम इंडस्ट्री एकेडेमिया पार्टनरशिप को बहुत प्रमोट करें और ये सेशंस जो हैं वो होते हैं फॉर आवर स्टूडेंट्स के वो आपसे लर्न कर सकें, आपके एक्सपीरियंसेस से लर्न कर सकें। और माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस बैकग्राउंड बहुत रेलेवेंट है हमारे लिए आज, और आज का टॉपिक हमारा बहुत दिलचस्प है। सो बिफोर हम फॉर्मल लॉन्च करें और मैं आपको फॉर्मली इंट्रोड्यूस करूं, एक क्विक हम प्रोमो वीडियो रन करेंगे अबाउट नूर इंटरनेशनल जो हमारे करंट प्रोग्राम्स हैं, and then I will come back and we'll do the introduction and launch straight in. So admin team, over to you. थैंक यू वेरी मच जी। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच सालिम फॉर हैविंग मी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, सो विद दिस हम आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं फॉर्मली। सो हमारे साथ आज है जी डॉक्टर हारून लतीफ़। डॉक्टर हारून इज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल, mashallah, an icon of Lahore. Harun Latif is a competent and experienced PMDC verified clinical embryologist and reproductive medicine specialist. Graduated in 2002 from Bakai Medical University and did his house job from Services Hospital Lahore in 2003 में। फिर उन्होंने ज्वाइन किया लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ फर्टिलिटी एंड एंडोक्रिनोलॉजी लाइफ जिसको कहते हैं 2004 में एज अ ट्रेनी एम्ब्रियोलॉजिस्ट, and then went for his master's degree in clinical embryology from Monash University in Melbourne, Australia. After his master's in clinical embryology, he joined Life 2006 के अंदर and introduced pre-implantation genetic diagnosis in 2009 after getting training in Jordan Hospital IVF Center in Amman, Jordan. Dr. Haroon has presented a number of talks on various clinical and research topics on multiple forums, nationally and internationally. He is the CEO of Life since 2007 and is the managing director of Hamid Latif Hospital of Lahore. Dr. Saab, again, thank you very much. MashaAllah, badi impressive aapka track record, history in the field of healthcare. MashaAllah, apni itni contributions की हैं. आज का हमारा टॉपिक is medical tourism, especially in the post-COVID era. पाकिस्तान के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज हैं एक इसको हेल्थ केयर की टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने के लिए। बट बिफोर के हम फॉर्मली अपने टॉपिक के अंदर जाएं, थोड़ा सा अपने लाइफ स्टोरी के बारे में बताइए, हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल के बारे में बताइए, और फिर हम आज के सेशन के अंदर उस पर तबसरा करते हैं। ओवर टू यू। Thank you, Salim, again. Thank you for having me and letting me share my experience and thoughts with the students and with the faculty and whoever else is. I thought कि मैं अपने introduction के अंदर you've already given such a nice introduction of my background and my work. I'll share a couple of experiences जो कि highlight करते हैं my work, which affected my career dramatically in a positive way.
Firstly, when I graduated from Buckeye Medical University and did my residency in Services Hospital, Lahore, uh, after the initial part of the residency, I had to choose a specialty. And obviously, there was a long list of different options that were available, which I could do as a medical doctor. But I chose a very niche, small specialty, which is infertility or fertility or reproductive medicine, or whatever you want to call it. अब हुआ ये कि जब मैंने चूज की तो मुझे मेरे सीनियर्स ने, कॉलीग्स ने और इवन मेरे फैमिली मेंबर्स ने जो कम फ्रॉम अ डॉक्टर्स फैमिली, उन्होंने थोड़ा सा कंसर्न शो किया कि जी व्हाई डू यू वांट टू गेट इनटू सच अ स्मॉल फील्ड जबकि इतनी सारी और ऑप्शंस अवेलेबल हैं. But I thought this is a field is ignored, has a lot of taboos attached to it, and is obviously definitely our society needs good fertility specialists because there's so many concerns that revolve around it. I made that decision, went to Australia, did my master's, came back. And now, about almost 20 years after my master's degree, I honestly feel that that was the right decision for me because what I've achieved in a short span of time in this particular niche field, मैं बिल्कुल भी किसी mainstream specialty में ना कर सका. So a great learning lesson for myself and whoever I share with के ये जो decisions होती हैं, these are very important. And once you make these decisions, stick to them. बहुत बहुत दफा ये होता है कि they work out to be fine. Another milestone, in a way milestone in my career was when I decided to do a second fellowship in sexual medicine. Again, a field which is linked with a lot of taboos. People don't want to talk about it. Obviously, this is something which is a global thing, and everyone is kind of affected by it. So, wo fellowship I did from Europe. I was the first fellow of European Committee of Sexual Medicine in the country. I launched this specialty, mashallah, running my class and getting trained in this field. And the trickle-down effect has gone into the peripheral smaller cities as well. And a lot of patients are being treated who were being ignored or not treated properly before. So I feel that I'm very passionate it's brought into the country and so my day is hospital a management course from Harvard Business School. It was managing care delivery. Again, I feel that course really helped me as far Oh, I think we seem to have lost Dr. Aru. Let's just bear with technology. 10 minute के लिए hopefully वो rejoin करेंगे.
Okay, we're back. Thank you, Dr. Harun. I think हम थोड़ी देर आपको lose कर दिया, लेकिन now you're back. So let's continue. So, डॉक्टर साहब, अगर हम थोड़ा सा लेट्स फास्ट फॉरवर्ड थोड़ा सा अपने आज के टॉपिक के बारे में, आपने अपना बैकग्राउंड बताया और माशाल्लाह आई थिंक इसी बैकग्राउंड को मद्देनजर रखते हुए अगर हम थोड़ी सी बात करें अबाउट मेडिकल टूरिज्म, तो ये जो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट इटसेल्फ है, आई थिंक ये एक इस तरह की मार्केट है जहाँ पे ठीक है, ऑफ कोर्स बहुत कॉम्प्लेक्स इंटरवेंशंस रिक्वायर्ड होती हैं, लेकिन दोज आर इंटरवेंशंस जहाँ पर आपके पास जेस्टेशन पीरियड्स लंबे होते हैं, रिस्क फैक्टर अगेन इन माय नेसेंट इतना मुझे नहीं पता, बट आई वुड अज्यूम के लेट्स से एज अपोज टू फुल फ्लेज सर्जिकल इंटरवेंशन जिसके लिए मेडिकल टूरिज्म हो रही है, ये एक ये भी मुझे अंदाजा है कि बाहर यूरोप में, अमेरिका में बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स है फर्टिलिटी के, तो इसके बारे में बताइए अगर आप थोड़ा सा कि विद इन द फर्टिलिटी ट्रीटमेंट सेक्टर क्या metrics हैं which we could deploy for measurement about how ripe is Pakistan इस तरह की interventions के लिए, and what let's say yourself with Life and Hamid Latif can do about it. Thank you, Salim, again. And देखिए, fertility, medical tourism for infertile couples or fertility is probably the in top 3 specialities जिसके लिए लोग travel करते हैं. Obviously, there is transplant surgery. बहुत लोग travel करते हैं उसके लिए, renal हो जाए, liver हो जाए. And then there are cardiac patients जो travel करते हैं for their cardiac surgeries and other aspects. Fertility is up there with both these transplant and वो. उसकी basically 2 main reasons हैं. एक reason तो ये है, a fertile couple is physically fit. So that couple is not really a patient. They physically feel fine, they are mobile, by and large, they are a young couple. So it's very easy for them to go to another place, another country, and get their treatment done. Why do people travel for treatment? Obviously, cost is one of the drivers, but not the only driver. They also look for specialists, better specialists around the world, wherever they can go. And another factor is timeline. When you talk about IVF treatments or infertility treatments, uske andar timeline is extremely important because age factor is a thing. Age ke saath saath fertility decline karti hai, especially in women. So if they have to wait for a very long period of time for their treatment, then obviously the outcome of treatment is not desirable. For example, in NHS in UK, average waiting time for a fertility treatment is more than a year at best. And if you've had one cycle and you want another cycle, you might have to wait for 3 to 5 years. So वो बिल्कुल भी suitable नहीं होता. Hence, these couples look for places where they can go, get cheaper treatment, quicker treatment, and since they're physically fit, they're happy to travel anywhere else. अब अगर आप लाइफ की बात करें या IVF centers की बात करें, it is such a niche specialty, heavily dependent on technology and skill set, that any good IVF center around the world would be working at par. So you could get potentially the same kind of treatment you would get in any other developed country of the world. हमारे जो अच्छे IVF centers of the world हैं, the kind of results they are churning out are absolutely, we are churning out the same kind of results basically. So success rate बहुत important होता है couple के treatment के desirable outcome के लिए, और उनको वही success rate मिलता है when they travel to places like Pakistan, India and in this region. अब हमारा ख्याल है कि पाकिस्तान में as such medical tourism exist नहीं करती. When you talk about fertility, जिस तरह अभी हम कर रहे हैं, तो about 25% of my patients travel for their treatment from abroad. Excellent. We have a very busy clinic. Life जो है caters large numbers of patients every month, and we are doing more than 1,000 cycles a year, which is by any standard a big number. और उसमें आप सोचें कि almost close to 300 patients हमारे पास international travelers होते हैं. But most of them are not foreigners. They are overseas Pakistanis
traveling from Middle East, from UK, from Canada, US, all across the globe. So उनको advantage ये होता है कि they travel, they come, get the treatment done, high quality treatment, and also see the family. So basically, it's a nice package for them. And once you talk about the cost, one IVF cycle in US would cost around 25 to 30,000 US dollars, about 15,000 pounds in UK, and it's about $3,000 to $4,000 in Pakistan. मतलब कि आपका 4 लाख में 4.5 लाख में पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है. So 1/3 से भी कम कॉस्ट के अंदर they get the exact same treatment. Excellent. So I think जिस तरह आपने कहा डॉक्टर साहब, I noted कि आपने दो चीज़ों पे स्ट्रेस किया. Number one कि well I guess एक third factor automatically comes in, the risk factor जो किसी भी intervention का है of any sort. Keeping that aside for a moment, अगर हम बात करें about technology and competence, तो कॉम्पिटेंस के लिहाज से आई थिंक वी कैन सेफली से कि माशाल्लाह हमारे जो पाकिस्तानी ट्रेंड डॉक्टर्स हैं वो अपनी स्पेशलाइजेशन करके इंटरनेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम्स दे के दे आर लिटरली पॉलिनेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड. इसका मतलब है कि वाकई हमारे जो कॉम्पिटेंस है ऑफ द पीपल ऑफ द HR, दैट इज 100% देयर. टेक्नोलॉजी पे थोड़ा सा आप बताइए कि how do we stand, let's say, even in a topic close to yours, for example, fertility treatment, IVF, IUI, वहाँ पे are we up there? Are we able to attract decent technology? उसमें कितना factor होता है? Or of course, going onwards, there are more complex, like you mentioned, cardiology के लिए लोग आते हैं. Just out of curiosity, maybe rehab therapy, a lot of post-op rehab is for extended periods of time, a lot of times not covered by insurance, which we'll touch upon. But आपके experience में चलें, हमारा human resource तो यहाँ exist करता है, competence exist करती है, technology का कितना barrier आपके opinion में आता है on medical tourism when coming to a place like Pakistan? देखिए, पाकिस्तान का हेल्थ केयर सिस्टम जो है बहुत यूनिक है, और इसमें ऑब्वियसली देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन जो कि पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट हॉस्पिटल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और जो प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है. रिसेंटली आई वाज गोइंग थ्रू सम डाटा जो कह रहा था कि about 60 to 70% of the burden of private sector in one form or the other पाकिस्तानी हेल्थ केयर का टेकअप कर रहे हैं. अब होता ये है कि when you talk about medical tourism, उसके अंदर people travel to get these super specialist treatments, चाहे वो IVF हो fertility के लिए, चाहे वो cardiac surgery हो, चाहे वो transplant surgery and all of that. अब ये जो treatment facilities होती हैं, अगर कोई liver transplant कर रहा है या cardiac surgery कर रहा है, it has to be at a standard. उसमें you can't really cut corners. It's not like a general treatment जहाँ पे आपको different degrees of quality of treatment मिलेगा. इसमें it has to be at a standard, otherwise that procedures just cannot be performed. So luckily Pakistan के अंदर there are these islands of excellence. Certain hospitals are there in all the big cities. Karachi में है, Islamabad में है, Lahore में है, and other cities as well, जो कि अपनी अपनी जगह ये specialist treatments at an excellent level provide कर रही हैं. When I talk about कि जो excellent level provide कर रही हैं, that obviously means that they have the HR, like you rightly said, कि हमारे doctors or paramedics are very well qualified, and plus obviously they have the right equipment as well. So if we are providing these services, if you go to these islands of excellence and you look at their infrastructure, their facilities, their systems, their SOPs, they're as good as anywhere else in the world. So I think we are ready and prime for, we can cater to anyone coming from anywhere in the world. Fantastic, fantastic. Thank you. कोविड की बात करते हैं डॉक्टर साहब. कोविड ऑफ कोर्स हर लैंडस्केप, हर सेक्टर में उसने लैंडस्केप चेंज किया है इन द लास्ट 1.5 years दैट वीव एक्सपीरियंस्ड. उसके आई थिंक लेट्स से इलेक्टिव प्रोसीजर्स में काफ़ी हद तक
probably decline आई होगी in most healthcare oriented options across the world. Travel के ऊपर बहुत restrictions लगी, vaccinations आई, अब I think काफी हद तक वो reopen हो गए हैं. लेकिन I think healthcare in particular में आप agree करेंगे probably के बहुत सारी even in पाकिस्तान जो बहुत infancy पे थी अपनी services, things like home healthcare for example, things like telemedicine, teleconsults, हम भी जानते हैं बहुत डॉक्टर्स ने ये शुरू किया क्योंकि कोविड है, ट्रांसमिटेबल है, कम्युनिकेबल डिजीज है, कंटेजन बहुत ज़्यादा थी, तो प्रेवलेंस आई लोगों के अंदर, एक वो आई, डर भी आया, खौफ भी आया, एंड लेट्स से एक रिस्क अवर्जन भी आई कि जी अच्छा मे बी हम इतना ज़्यादा ना करें. सो ऑल दिस गेव राइज टू अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सिनेरियो इन हेल्थ केयर. आपके ओपिनियन में कोविड के बाद, अब एज वी आर टर्निंग द कॉर्नर अराउंड कोविड, तो थोड़ा सा बताइए कि कोविड के दरमियान आपको क्या चीजें नजर आई, एंड अब एज वी टर्न द कॉर्नर आपको क्या नजर आई इन टर्म्स ऑफ लेट्स से मेडिकल टूरिज्म एंड जनरली इन द हेल्थ केयर सेक्टर, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? Obviously, देखें, COVID is a horrible disease, and it has affected millions and millions of people all across the globe. Pakistan में luckily, although बहुत लोग affect भी हुए, and unfortunately a lot of people uh, lost their lives as well, even doctors and paramedics as well, which is very unfortunate. लेकिन फिर भी जितनी डेविस्टेशन कोविड ने दूसरे मुल्कों में की है, कुछ कंट्रीज में, उतनी अल्लाह का शुक्र है हमने उस तरह से फेस नहीं की. बिसाइड्स द फैक्ट कि ये एक इतनी हॉरिबल डिजीज है, मैं कहता हूँ, जो मैं अपने दोस्तों से भी बात करता हूँ, कि कोविड ने हमें कुछ गिफ्ट्स दिए, जिसमें वन गिफ्ट इज हैविंग दीज वर्चुअल मीटिंग्स. So obviously, everyone has gotten so used to meeting virtually, interacting virtually, working virtually, कि वो इस प्री कोविड एरा में बिल्कुल भी सोचा भी नहीं जा सकता था. उससे हमारी बहुत सी चीजें ज़्यादा एफिशिएंट और लीन हो गई हैं, and we work more effectively in certain areas, obviously. अब as a doctor, throughout COVID times, I was there in the hospital. लेकिन still, as a doctor, हुआ ये कि आपने बात की टेलीमेडिसिन की, रोल ऑफ टेलीमेडिसिन या इम्पोर्टेंस ऑफ टेलीमेडिसिन बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई और सामने आई. मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि few years ago, Punjab government started a telemedicine program which became extremely successful. क्योंकि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम का एक चैलेंज है यहाँ पे कि हमारे बेसिक हेल्थ यूनिट्स और DHQ हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते. So what they did was they set up these telemedicine stations in these villages and in these DHQs, BHQs and DHQs, जहाँ पे उन्होंने उनको मैन किया नर्सेस से या इवन जूनियर डॉक्टर्स से, और कनेक्ट कर दिया टू टर्शियरी केयर हॉस्पिटल, and it worked really well. And the key was that it was a public-private partnership. So it was taken up really well, and a lot of patients were using it. जब COVID आया, obviously, वही इस तरह की facilities जो हैं प्राइवेट सेक्टर ने भी इंट्रोड्यूस करना शुरू हो गए, और obviously patients have gotten used to taking up these consultations through telemedicine, and even the doctors have gotten used to it. So बहुत अच्छी तरह इस चीज की यूटिलाइजेशन अब स्टार्ट होगी, and I hope कि this will continue, and a lot of and developing countries will benefit so much from this, क्योंकि obviously a consultant cannot be at two places at one time. So obviously, by sitting somewhere remotely, they can really help the patients by using this telemedicine technology. Fantastic. Having said that, when you talk about, you were saying that COVID, post-COVID, yeah, in a way, tail end of COVID, pay medical tourism. Yes, now the world has opened up, so people have started to travel. So definitely, it is a great opportunity. I think it's a great opportunity for the country to start, for a fresh start, कि जी अब देखें दुनिया खुल रही है और पाकिस्तान भी खुला हुआ है for people to come in and get the treatments done.
बिल्कुल ठीक। आई थिंक आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सॉरी इन स्लाइट जेस्टिंग मैनर, आई थिंक हेयर ट्रांसप्लांट, as you can see, I think I'm an ideal candidate for that, has seen जब से vaccinations introduce हुई हैं March 2021 onwards, there's been a rapid rise in hair transplant because people realize कि अच्छा हम घर पे हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो चलो बिकॉज वी कैन वर्क रिमोटली, a lot of people went to destinations जहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट्स होते हैं. एंड आई थिंक लेबनान फॉर एग्जांपल इज अ केस इन पॉइंट जहाँ पे बहुत सारी कॉस्मेटिक सर्जरी, आपने भी जॉर्डन का जिक्र किया, that market is very ripe for things like cosmetic related hair transplant, laser surgeries and so on. So बहुत I think उसमें recent times में bump आया है, we've definitely seen an uptick. डॉक्टर साहब, एक डिफरेंट टाइप ऑफ हेल्थ टूरिज्म इज कमिंग इनटू माय माइंड. आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि हमारे पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स जो आज एग्जिस्ट करते हैं इन पाकिस्तान, जो भी कोई कुछ कह ले, आई थिंक माशाल्लाह द वॉल्यूम्स जो कि वो हैंडल करते हैं एंड द sheer breadth of disease that they get to see, and a lot of times diseases जो कि बाकी दुनिया में से खारिज हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं. पोलियो फॉर एग्जांपल बीइंग वन ऑफ देम, जो कि अभी भी हमें इन पाकिस्तान तंग करते हैं. मुझे एक डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिकल अपॉर्चुनिटी स्ट्राइक करती है, विच आई थिंक आप भी एक मेडिकल कॉलेज भी रन करते हैं, इज रिसर्च ओरिएंटेड मेडिकल टूरिज्म. कि आप पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज को बुलाएं, आप स्पेशलिस्ट को बुलाएं जो कि रेलेवेंट रिसर्च कर सकें, क्योंकि जो डिजीजेज फॉर एग्जांपल अगेन इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, डेवलप्ड वर्ल्ड अब खत्म हो चुकी हैं, वो पाकिस्तान में उनकी प्रेवलेंस पे देख के एक्टिव रिसर्च कर सकते हैं. सो वुड यू एग्री कि आई थिंक फ्रॉम एन एजुकेशन पर्सपेक्टिव आप एक स्मॉर्गेस बोर्ड ऑफर कर सकते हैं उनको फॉर रिसर्च. तो आई डोंट नो इफ यू कैन कमेंट ऑन दैट अ लिटिल बिट. उसमें देखें सालिम, एब्सोल्युटली. आप अभी यू वर सेइंग कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं दे आर रिकग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, and they are well respected, well reputed doctors working across the globe. अब होता ये कि ये डॉक्टर्स कहाँ से ट्रेनिंग लेके जा रहे हैं या सीख रहे हैं? Obviously ये most of these doctors get their initial taste of medicine from Pakistan. वो यहीं पे मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ते हैं, मोस्टली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं, यहीं पे वो हाउस जॉब्स करते हैं, एंड अ लॉट ऑफ देम डू देयर बेसिक ट्रेनिंग्स, अपनी रेजिडेंसीज भी यहीं पे करते हैं. और यहाँ पे बर्डन ऑफ डिजीज या वॉल्यूम्स कमिंग टू दीज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर सो ह्यूज दैट यू गेट एक्सपोज्ड टू ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स. वो जिसको कहते हैं कि जी हाथ खुल जाता है आपका यहाँ पे जब आप इमरजेंसी में एक रात के अंदर इफ यू गो थ्रू 500 पेशेंट्स इन अ 50 बेड इमरजेंसी. सो वो ऑटोमेटिकली जब आप अपनी 4 साल की यहाँ पे ट्रेनिंग या रेजिडेंसी करके निकलते हो, तो यू हैव so much confident in your skill set and dealing with all kinds of diseases. And obviously then we have these regional diseases जो कि western world ने देखा नहीं है. Tuberculosis is one of them. हम अभी भी देखते हैं, वो देखते नहीं. Hepatitis, it's kind of rampant in certain parts of the country. वेस्ट के अंदर या इन डेवलप्ड कंट्रीज में नहीं है. सो ये सारे जिस तरह आपने कहा, ये इस तरह की डिजीजेस हैं जिन पे a lot of research is being done, but obviously there's a potential कि हम इनको further और use कर सकते हैं, and we can use our environment, our condition to create these exchange programs. The CPSP, which is the College of Physicians and Surgeons of Pakistan, is doing an excellent job. They have created these exchange programs in which our residents, they travel to places like Ireland, UK and all these other countries, और वहाँ पे कुछ ऐसा ट्रेनिंग में गुजारते हैं. वो उनको वहाँ का एक्सपोजर मिलता है, एक फ्लेवर ऑफ फॉरेन हॉस्पिटल्स मिल जाता है. Similarly, these people can travel to Pakistan, and we should get them over here, and so that they get exposed to whatever challenges we are facing over here. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. थैंक यू डॉक्टर साहब. थोड़ा सा स्विच गियर्स करते हैं डॉक्टर साहब. हमने जिस तरह बात की कि कुछ ऑब्वियसली लो रिस्क इंटरवेंशंस भी हैं,
अगर हम हाई रिस्क इंटरवेंशन के बारे में बात कर रहे हैं, सर्जिकल इंटरवेंशन के बारे में बात करें, और एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे आपने टच अपॉन किया था एज वी स्टार्टेड द कॉन्वर्सेशन, व्हिच वाज ऑर्गन ट्रांसप्लांट। पाकिस्तान में थोड़ी सी एंड नेबरिंग इंडिया में भी आई थिंक कुछ पिछले फ्यू डेकेड्स में बहुत ज़्यादा एक एलिमेंट रहा है ऑफ लेट्स से नॉट अनएथिकल प्रैक्टिसेस इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स। उसकी वजह से आई थिंक हमारी गवर्नमेंट तो डेफिनेटली पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने स्टेप अप किया है। the organ transplant, human organ transplant regulatory authorities have come up, होटा आ चुकी है। तो उसके बारे में आप बताइए कि ऑब्वियसली दे आर लिवर ट्रांसप्लांट्स हैं, किडनी ट्रांसप्लांट है, दे हाई रिस्क बट आल्सो एक्सपेंसिव सर्जरी, सो वो बड़े आइडियल कैंडिडेट भी बन सकते हैं, बन जाते हैं फॉर मेडिकल टूरिज्म पर्पसेस, प्रोवाइडेड कि ऑफ कोर्स एथिकल ट्रांसप्लांट प्रैक्टिसेस आर फॉलोड। आपके ओपिनियन में इसी को अगर हम आगे लेके चलें तो आपका क्या ख्याल है कि इस वाले एरिया में गवर्नमेंट एंड रेगुलेटर्स का क्या रोल होना चाहिए? व्हाट कैन दे डू बेटर? प्राइवेट सेक्टर का, आपकी तरह के लोगों का रोल क्या हो सकता है? व्हाट डू वी नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज डेफिनेटली वैल्यू प्रोपोजिशन आज एग्जिस्ट करती है ऑन द टेबल। सो उसके बारे में ऑर्गन ट्रांसप्लांट हायर एंड के बारे में जरा बात कीजिए कि व्हाट आर योर कमेंट्स हियर? देखिए, when you think about medical tourism or you talk about medical tourism, generally speaking, सबसे पहले ट्रांसप्लांट सर्जरी की टूरिज्म स्टार्ट भी सबसे पहले वही हुई थी और सबसे कॉमन भी अभी तक वही है. You mentioned that India is one of the regional hubs for transplant surgeries. So is China and some of the other countries also in the region. अब होता ये है कि because of illegal organ trade, a lot of concerns revolve around these transplant surgeries, and obviously they're high risk surgeries also. So besides this illegal organ trade, there are other challenges linked to it when a patient decides to travel for such a extensive surgery, जो कि high risk surgery होती है, जिसमें mortality and morbidity काफी हद तक high भी है. Pakistan, about more than a decade ago, kind of put a stop to this illegal trade to a great extent, I would say. I think the government did an excellent job. इन्होंने पाकिस्तान ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी बनाई. आई थिंक उसका एक्ट अराउंड 2010 में आया और उन्होंने कंप्लीटली हमारा ये ट्रांसप्लांट सर्जरी को रिवैम्प कर दिया. नॉट ओनली फॉर लिवर और किडनी, एनी ट्रांसप्लांट, कोई भी आपने ट्रांसप्लांट कराना है वो वहाँ है. और उस एक्ट का बेसिक जो आई थिंक जो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर वो बना हुआ है, उसमें ये है कि ट्रांसप्लांट सर्जरी या तो कैडेवर से होगी या फिर फैमिली के अंदर होगी. एंड द रीजन वाज कि वो लोग आके अपनी गुर्दे बेच रहे हैं और वो सारा कर रहे हैं उसको स्टॉप करने, एक्सप्लॉयटेशन जो है वो खत्म करने के लिए. आई थिंक इट हैज वर्कड रियली वेल फॉर अस. Although, having said that, उसमें जब इतनी strict rules and regulation और compliance आ जाती है तो there's a potential risk of delays in this. क्योंकि if every file has to go to a regulatory authority, get scrutinized, and then obviously given a green light for the treatment, तो at times for the patient who's suffering उसके लिए कुछ ज़्यादा delays हो सकती हैं and the condition of the patient may deteriorate. But obviously exploitation को avoid करने के लिए stringent rules and regulations रखना ज़रूरी थे. अब it is working. I think it's more well oiled now और थोड़ा सा फास्ट ट्रैक चीजें होना शुरू हो गई हैं. अब चैलेंज ये रहेगा जो है अभी भी कि पर्सन हु वांट्स टू कम टू पाकिस्तान फॉर इंस्टेंस एंड गेट अ लिवर ट्रांसप्लांट डन, व्हिच इज अ हाई रिस्क सर्जरी इन इटसेल्फ. अब उसका आइडियली उसके पास इंटरनेशनल इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए क्योंकि कॉस्ट बहुत वेरी करती हैं. ऑल्दो आई वाज रीडिंग समवेयर पाकिस्तान में जो लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी हो रही है इज प्रॉब्ली द चीपेस्ट इन द वर्ल्ड. यहाँ पे आप तकरीबन 40 से 50 लाख में एक लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी कर लेते हैं. इफ यू गो टू इंडिया इट्स ऑलमोस्ट ₹1 crore. So 50% of what and then obviously
rest of the world it's even more expensive. So वो है, so हमें कॉस्ट का तो बेनिफिट डेफिनेटली है यहाँ पे. However, दूसरे challenges ये है कि हमारा इंश्योरेंस कवरेज यहाँ पे इतना अच्छा नहीं होता. इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनीज की अपटेक हम लोग इतनी अच्छी नहीं करते. ऑब्वियसली ये जो ट्रांसप्लांट सर्जरी, अगर आप लिवर की बात करें या किडनी की बात करें, देयर आर ओनली अ फ्यू प्लेसेस हु आर डूइंग इट. उसमें मोस्ट ऑफ देम आर इन द प्राइवेट सेक्टर. सो द गवर्नमेंट हैज टू आल्सो कम अप विद प्लान्स जो कि प्राइवेट सेक्टर को ऑन बोर्ड करें, उनको इनकरेज करे, प्रमोट करे और सपोर्ट करे ताकि दे कैन cater to these patients. So yes, in these high risk surgeries, there are a lot of challenges that are involved as far as the patient coming in is concerned, and also as far as the facility who's doing the procedures as well. But at the same time, ऐसा कोई challenge नहीं है जो कि address नहीं किया जा सकता. Got it. Thank you for that information. आपने इसकी medical insurance की थोड़ी सी बात की. इस पे let's dilate upon this for a little bit. कि इसके दो पहलू हैं. Again, मेरी limited understanding से ये मुझे समझ आती है कि अमेरिकन जो US based healthcare system is expensive for the fact कि जी वहाँ पे medical insurance बहुत सारी चीजें cover करती है, even the personal liability, let's say, of a surgeon and of course of the hospital, of all the staff that is being that is operating on a particular patient, उसको भी वहाँ से cover मिलती है. Doctors के अपने premium होते हैं, so everything kind of adds up और वो inflate होती जाती है the cost. So apparently वहाँ भी जाके अगर आप कहें कि अच्छा जी मैं direct payment कर रहा हूँ तो cost काफी खासी कम हो जाती है apparently for private healthcare if you do a self pay option in the US. But ये बताइए कि here in Pakistan दो इसके पहलू हैं. नंबर एक पहला पहलू है कि आप कह रहे हैं कि वाकई कुछ मेडिकल इंश्योरेंस कवरेजेस यहाँ पे मिलती हैं, लेट्स से विद इंटरनेशनल पार्टनर्स जिनकी कवरेज होती है वो यहाँ पे एप्लीकेबल होती हैं. एक ये सवाल है. एंड नंबर टू, हमारे डॉक्टर्स हमारी इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कवरेज वगैरह इन केस समथिंग गोज रॉन्ग तो उनकी पर्सनल लाइबिलिटी के ऊपर जो पोटेंशियल एकदम रिस्क आ जाता है उसके बारे में थोड़ा सा इफ यू कैन स्पेल आउट, अगर यहाँ पे कोई रेगुलेशन एग्जिस्ट करती है इन पाकिस्तान. इसमें थोड़ा सा परसेप्शन क्लियर करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि टिल फ्यू इयर्स अगो हमारे इवन लोकल पेशेंट्स हार्डली अपने बिल्स पे करते थे इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल लाइक हॉस्पिटल जो इंश्योरेंस कवर करता था. एवरीवन वुड कम एंड पे आउट ऑफ पॉकेट. हार्डली होता था कि किसी का कोई किसी किस्म की कोई इंश्योरेंस है, क्योंकि हम लोग शादी के लिए पैसे बचाते हैं, हॉलिडे के लिए पैसे बचाते हैं, गाड़ी लेने के लिए पैसे बचाते हैं, बट अपनी हेल्थ के लिए कोई पैसे नहीं बचाता बिकॉज दे फील के दिल नेवर फॉल सिक. तो वो था. लेकिन मैंने इन रिसेंट ईयर्स बहुत चेंज देखा है, especially in those people who are working for these multinational or these groups जिनमें कंपल्सरी हो गया है कि आपने अपने एम्प्लॉयज को इंश्योर करना है. सो अब अगर मैं आपको हमीद लतीफ के स्टैट्स बताऊं तो ऑलमोस्ट 30 to 35% ऑफ द पेशेंट्स आर कमिंग इन हु आर ऑलरेडी इंश्योर्ड. सो ये तो हमारा एक लोकल वो है. सो इंश्योरेंस हमारी इन्फेंसी से अब थोड़ा सा आगे जाना शुरू हुई है और मोर एंड मोर पीपल आर टेकिंग इट अप. अब जहां तक इंटरनेशनल इंश्योरेंस की बात आती है, या समवन हु इज ट्रैवलिंग फ्रॉम अब्रॉड फॉर ट्रीटमेंट एंड इज कवर्ड ग्लोबली बाय एन इंश्योरेंस कंपनी, होता ये है कि द हॉस्पिटल finds out, okay, it's a global international insurance company, and suddenly they are scared कि ये ना हो कि पेशेंट ट्रीटमेंट करा के चला जाए और उधर से हमें पेमेंट ना हो तो हम किसके पास जाएंगे. So that concern within the private sector is still there as far as taking up these patients who are covered by a global insurance company. So what the process right now is that they ask the company to pay in advance and then extend treatment to the patient, which a lot of these companies are happy to do, but is probably it's kind of a cumbersome process, right, and not ideal. So वो थोड़ा सा concern है. As जैसे जैसे ये common practice होना शुरू हो जाएगी, if we get more and more patients who are coming with these global insurance
companies, then obviously healthcare service providers भी comfortable होते जाएंगे और उसको आगे लेके चलेंगे. So वो है. Sorry, what was the second part of your सेकेंड पार्ट वाज question? कि आप भी इसको जरूर फेस करते होंगे कि पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ लेट्स से आपके सर्जन्स हो गए, आपका स्टाफ हो जाए, मेडिकल मैल प्रैक्टिस के इश्यूज हो जाएं, जो कि अब पाकिस्तान में भी थोड़ी वो लिटिजियसनेस, आई डोंट नो इफ दैट इज अ वर्ड एक्चुअली, बट लिटिजियसनेस बढ़ती जा रही है. तो उसके केस में स्पेशली मेडिकल टूरिज्म को सस्टेन करने के लिए आई थिंक इंस्टीट्यूशनली भी देखना पड़ेगा कि किस किस्म के सेफगार्ड्स आर इन प्लेस. लेट्स से लायबिलिटी इंश्योरेंस, आपके जहन में डज एनीथिंग कम टू माइंड इस तरह की जो कि ऑफर होती है इन पाकिस्तान करंटली? देखें, as far as I know, I may be wrong, but generally speaking, in government sector में तो बिल्कुल नहीं है, private sector में भी, as most of the consultants working are visiting consultants, आपको पता है वो employees नहीं होते of the hospitals, so they don't have any malpractice cover. हम लोगों ने हमीद लतीफ हॉस्पिटल में स्टार्ट किया है कि we have in-house legal team, जो कि हमने ऑफर करना किया है अपने विजिटिंग कंसल्टेंट्स को that if they at a minimum amount monthly pay they would have that cover of that legal team, so in case some issue arises they would be covered and the team can go and support them at any forum. So that is that is a in-house practice जो कि एक बहुत छोटे स्केल के ऊपर हम कर रहे हैं, but generally speaking for now, the insurance companies do not want to get into that because they feel that there's a lot of ifs and buts around it. At the same time, कोई और ऐसा फोरम नहीं है जिसको टेक अप करना चाहता है. However, जो पंजाब के अंदर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जो है, जो रेगुलेटरी बॉडी है ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स, उनके एक्ट के अंदर ये लिखा जरूर हुआ है कि अगर किसी डॉक्टर को अनड्यू कोई प्रॉब्लम है तो देन हेल्थ केयर कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर ऑफ दैट डॉक्टर, और कोई इश्यूज होंगे तो वो हेल्प करेगा डॉक्टर को टू एड्रेस इट. Got it. Got it. Thank you. I think thank you for sharing that knowledge. So, Dr. Saab, we are approaching time. Lekin how could we end the conversation without addressing what we'll say is the elephant in the room? और हमारे overwhelmingly सवाल I think on our Facebook portal भी आ रहे हैं about the particular path of specialization that you have chosen. How did you arrive at के ये rather unorthodox path? Because it आप बिल्कुल सही कहा कि infertility बड़ा एक taboo subject है, difficult subject है हमारे मुआशरे में इसके बारे में बात करने में. Why did you choose it? How did you choose it? उसके बारे में थोड़ा सा हमें आगाह करिए. देखें, जिस तरह जब मैंने डिसाइड किया ये करने का, क्योंकि आई थॉट कि अगर आप किसी मेन स्ट्रीम स्पेशलिटी पे जाएंगे तो probably there are a sea of doctors there doing their mainstream stuff, which is absolutely important. Obviously, burden of disease इतना ज़्यादा है कि you need your GPs, you need general obs and gynae, you need general surgeons and all of those people who are doing an excellent job. लेकिन then future of medicine या future of healthcare जो है वो सब specialities या super specialities के अंदर है. Things like robotic surgeries हो गई, things like ये ART related होगी, and there's so many other examples. Even a cardiac surgeon is not only a cardiac surgeon. There's a pediatric cardiac surgeon, then there are others as well, and so on and so forth. So ये बहुत important है कि we do not end up getting into the mainstream specialities. Once we're choosing our path, we should get into something niche, क्योंकि वहाँ पे we can make a lot of difference और वो बड़ा impactful भी होता है. There are so many people who are doing ops and gynae, but as a fertility specialist, like I was saying before, 10, 15 years down the line, I've realized that जो मुझे recognition मिलती है वो maybe एक general practitioner को उस तरह से नहीं मिलती. So if your students are also listening, मैं तो कहूँगा कि if you decide to choose a specialty, go for something really niche. We have the facilities and the resources in our country, and the country needs those super specialities to come to Pakistan.
Thank you, very kind. In fact, मेरा अगला सवाल यही था, which you've already answered, कि if there were a parting message for our current students, our recent alumni, and those जो कि अभी अपना educational career शुरू कर रहे हैं, what would be parting words? आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारा again, alhamdulillah, I think Pakistan being what I believe the 6th most populous country in the world, इसका फायदा ये है कि हमारी ये 210 मिलियन की आवाम में हर किस्म की स्पेशलिटी, यू नेम इट, उसकी ज़रूरत है. जर्नलिस्ट की भी ज़रूरत है हर लेवल में, लाइक यू सेड, ऑल द वे फ्रॉम नर्सिंग टू पैरामेडिकल टू डॉक्टर्स टू सुपर स्पेशलिस्ट, उसकी एक नीड है और हर किसी चीज़ की खपत है. बट यस, चूज वाइजली. आपका एक ही करियर है एंड यस यू कैन पिवट. आई थिंक हम हमेशा कहते हैं कि फ्लेक्सिबल रहें, तो इसमें कोई शक नहीं है. डॉक्टर साहब, बहुत ही दिलचस्प कॉन्वर्सेशन रही आज हमारी, एंड हम बहुत मशकूर हैं कि आपने अपना टाइम निकाला इन पर्टिकुलर हमारे साथ आज गुफ्तगू करने के लिए. हम ऑल्सो मशकूर हैं टू आवर ऑडियंस जिसने हमें ज्वाइन किया है, हमारे इनकमिंग स्टूडेंट्स, हमारे प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स, करंट स्टूडेंट्स, अलमनाई, फैकल्टी, टीचर्स, दोस्त जो कि बाद में इस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे. Do bear in mind, हम as Noor International, हमारा goal is to promote this linkage between real life and academia. That's how we try and make a difference. अगर हमारे से कोई सवाल हो, इवन बाद में हमारे स्टूडेंट अफेयर्स ऑफिस इज अवेलेबल. डॉक्टर हारून साहब के लिए कोई सवाल हो, इंशाल्लाह आई थिंक समवेयर एज हम सारे अपने गेस्ट को कहते हैं कि जी विद कोविड हैविंग टर्न्ड द कॉर्नर, इंशाल्लाह हम कोशिश करके आपको एक फिजिकल इनविटेशन भी भेजेंगे टू कम टू कैंपस एंड एक गेस्ट लेक्चर के तौर पे हमारे स्टूडेंट्स को एड्रेस करें. एंड रियली अप्रिशिएट द टाइम. Thank you again for joining us. Thank you so much, Salim. Okay. Assalamu alaikum. Family.